I guess we are live. Hello. So, hey guys, welcome back to Codecules. If you are new here, my name is Harshit. And let's just wait for people to join. We should. Okay, one, two, get it. So, wait for it. Yeah, all right. I see. Yesterday, we had solved two or three problems from Monotonic Stack, and today we will continue from there. Sure. Hey Zoro, welcome back. How are you? And are you ready for today's problem solving session? Okay. So let me give a brief introduction. If you guys or any one of you is new here, my name is Harshit. I am currently in my final year preparing for my placements. I started this series for building up consistency and discipline in solving problems regularly. And I took a challenge to solve 455 DSA problems in Striver's sheet in just 45 days, जो कि अभी तो मुश्किल लग रहा है कि हो पाएगा, but we will extend this series. We will continue solving problems. The main goal was to be consistent and disciplined. That is what we are becoming, consistent and more disciplined. So somewhere we are winning, but we have to extend this number of 45 की जगह 60 days लग जाएंगे, I guess. So we will continue, and we have our and some exams in this same month also. So we have to balance out DSA with my and some exams. Okay. So that is why I'm just slowing down with DSA. मतलब DSA को continue रखेंगे, but we'll solve little less problems every single day, and we'll be focusing more on my and some exams. Okay. And yesterday, talking about yesterday we had solved three problems, named four problems. Capping rainwater पिछले दिन कर लिया था day 35 में, but yesterday we revised its intuition and solution. But the new problems we solved next smaller element problem and number of NGEs to the right and sum of Subarray minimum. These three problems we have solved yesterday, and today we will continue with the next problems. That is asteroid collision, sum of Subarray ranges, and remove k digits. And yesterday, when I was trying to solve this problem, I could not come up with a solution or intuition by myself. So we will
watch a tutorial or a solution video for the same. If still I could not get a possible solution for this. So should we start? Are you guys ready? Today we are having 10 concurrent viewers on the beginning. Do you guys have any question? We will start in 5 minutes. Zoro, are you there? Or left the chat? I think I should start. There are so many people watching our screen but not interacting. Okay, let's get back. Okay, so yesterday we had solved this. Okay, SG bhai is here. Welcome, SG bro. What is up? Let's quickly revise these problems that we. Okay, that's great. इसका इंटरव्यू हो गया यस ठीक है सबसे पहले let's revise this next smaller element problem we had solved it using stack monotonic stack in which we let's open the problem. Um, so if you have not tried this problem in which we have to find next smaller element for every element in the given array. So there is some array in which there are some numbers and we have to find next smaller element for each number. Suppose this is the example and we need to find small next a smaller element for every element in this. Okay, ZS associates. So we need to find next smaller element for each element other or if there is no small next smaller element in the given array then we will return -1 for each. So what we did for the solution we created a stack and started from the end of the array that is the last element that is 25 and we will check if the stack is empty like we will keep pushing in the stack if first we will check if okay one more thing we have created an array named result ठीक है जिसमें हम रिजल्ट स्टोर करेंगे और उसका साइज सेम है एज द गिवन एरे जितने जितने क्वेरीज गिवन होंगे उसी के साइज के इक्वल हम एक एरे रिजल्ट नाम से क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम उसके आंसर्स स्टोर करेंगे तो फॉर एवरी नंबर वी हैव अ next smaller element, right? And then we use a stack to keep track of the next smaller element. And we will start from the end of the array and we will check if the stack is empty while the stack is not empty and stack dot peak is greater than nums of I, we will pop the element. इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसके stack के पहले कोई भी नंबर अगर stack के अंदर है और वो you have solved an SE. Okay, I was just revising बट मेरे रिवाइज करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है मैं पूरा इतना डेप्थ में क्यों जा रहा हूँ वी वर ओनली पॉपिंग अप व्हेन द element on the top of the stack is greater than the current element then we will pop it and if it is smaller then we will insert it into our answer array that was the whole point and after that we will insert the current element into the stack okay and the number of ng is that is next greater elements. It has a whole query array या तो सॉल्यूशन थोड़ा अलग है नंबर ऑफ एनर्जी इज लेट्स सॉल्व वन जो अच्छी
and sum of Subarray minimums. एंड सबअरे मिनिमम्स का सॉल्यूशन कल हमने देखा था लाइक क्या बोलते हैं उसको फॉर ईच एलिमेंट वी हैड कैलकुलेटेड लेफ्ट एंड द राइट स्मॉलेस्ट एलिमेंट और द हाँ मतलब left smallest element and the right smallest element and we used a formula to find out the number of minimums in which the current element is the minimum in subarrays. Number of subarrays in which the current element is the minimum. Okay, let's move to the next problem. Asteroid collision. Let's go. We are given an array asteroids of integer representing asteroids in a row. The indices of the asteroids in the array represents their relative position in the space. So हमें एक एस्ट्रॉइड्स नाम की एक एरे गिवन है जिसमें इंटीजर्स हैं जो कि एस्ट्रॉइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं इन अ रो और जो इंडाइसेस हैं लाइक इंडेक्स ऑफ एवरी एस्ट्रॉइड इन द एरे वो रिप्रेजेंट करता है उसकी रिलेटिव पोजीशन इन द स्पेस so that means for example if 5 10 and minus 5 is given okay there is more context for each asteroid the absolute value represents its size and the sign represents its direction that means कि अगर given array में at particular index the integer is 5 then its absolute value is 5 which represents its size the larger the number the larger the size of that asteroid and the sign represents its direction okay if it is positive it is moving forward if it is negative it is moving backward and I will do it later SG bhai and each asteroid moves at the same speed तो speed तो सारे asteroids की same होगी this is also given in the question and find out the state of asteroids after all collisions if two asteroids meet the smaller one will explode if both are same the both will explode two asteroids moving in the same direction will never meet Yes. Sorry, the full screen zero. I hope now the lead code is visible on the full screen and we will solve it using brute force by ourselves first. So what we can do with this, we have array of asteroids in which the absolute value of each index represents the size of the asteroid and every asteroid is moving with the same speed and the sign represents the direction and also the relative position in space is also in the same order. So if 5 and 10 is given, that means 5 is moving besides 10 and in the same direction and their speed is same, so they will never collide. But 5, the next negative 5 is moving in the different direction and will collide with 10 and their speed is same and also given that if the size of the two asteroids is different, then the collision will result in the smaller one being exploded. मतलब जो छोटा वाला है वो explode हो जाएगा और सिर्फ बड़ा वाला बचेगा. And if both are same size, both will explode. Okay. And two asteroids moving in the same direction will never meet. So we just need to find out the asteroids with different signs
Okay, so if we are not using stack, how can Zoro is saying in lead code questions don't have good description. I have read it 4 times, still don't get it. I am explaining it. It's easy, मतलब इतना भी difficult नहीं है. Is it ये वाला एग्जांपल लेते हैं. उसमें क्या गिवन है पहले लाइन पे? Hmm, shit. Asteroid collision. See, क्या we are given an array of asteroids of integers representing asteroids in a row. The indices of asteroid in the array represents their relative position in space. Okay. So let's say we have this array as the input and each number in the array represents an asteroid, ठीक है, and its absolute value is the size. So that means कि जैसे first index पे अगर 3 है तो there is a asteroid of size 3. Suppose 3 is this, मतलब 8 कर देते हैं. So suppose this is of size 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So suppose this is size 1, this is size 2. इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं. And this is size 3. That will be 4. It's ज़्यादा complicated पर हो जाएगा. नहीं. But we will understand the solution better. So let's say this is 3. तो 3 वाला कौन सा है? ये asteroid है. तो इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ना 3 का, वो रिप्रेजेंट करता है उसके साइज को. ठीक है. 5 विल बी लाइक दिस. ठीक है. और -6 वाला इससे बड़ा होगा, बट विल बी मूविंग इन द डिफरेंट डायरेक्शन. ये तो यूजलेस है, बट आई होप यू गेट इट. तो इसमें फर्स्ट लाइन में क्या गिवन है कि, अच्छा मैं 2 लाइन का एक्सप्लेन कर रहा था. पहले लाइन में बस इतना गिवन है कि एस्ट्रॉइड्स गिवन है और उनकी रिलेटिव पोजीशन गिवन है. तो उनका जो इंडेक्स है, जैसे कि इस वाले एरे में इसका इंडेक्स 0 है, इसका इंडेक्स 1 है, इसका इंडेक्स 2 है, इसका इंडेक्स 3 है, इसका इंडेक्स 4 है, इसका इंडेक्स 5 है. तो इसका मतलब ये है कि देर आर 6 asteroids moving in some direction. Suppose this is an asteroid, this is also asteroid. ऐसे करके 6 asteroids हैं. ये भी एक एस्ट्रॉइड है, ये भी एक एस्ट्रॉइड है, ये भी एक एस्ट्रॉइड है, ये भी और ये भी. और इसका जो इंडेक्स है, मतलब ये वाला इंडेक्स, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये वाले जो इंडेक्सेस हैं इनकी रिलेटिव पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है स्पेस में. इसका मतलब ये है कि जो ये जो 0th इंडेक्स पे जो एस्ट्रॉइड है वो फर्स्ट वाले इंडेक्स के साइड में है. मतलब ये सारे किसी ना किसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसका मतलब है ये सामने की तरफ आ रहा है. अज्यूमिंग ये भी पॉजिटिव है तो ये भी आगे की तरफ आ रहा है, बट ये नेगेटिव है तो ये आगे आने की जगह ये इस साइड जा रहा है. अच्छा, यहाँ भी नहीं, इसकी जगह सपोज कि ये जो सारे के सारे एस्ट्रॉइड है इनका पॉजिटिव डायरेक्शन है राइट साइड. ठीक है. तो इफ इट्स वैल्यू इज पॉजिटिव, जैसे ये 3 है, 3 इसका साइज 3 है और ये राइट साइड को मूव कर रहा है. ओके. एंड आफ्टर दैट there is 5, it is also moving in the same direction, but after that there is 6 and with negative sign. इसका मतलब ये है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है. ठीक है.
ऐसे ही 2 है, ऐसे ही 4 है एंड -1। तो ये जो -1 है इसका डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। नेगेटिव का मतलब है लेफ्ट साइड, पॉजिटिव का मतलब है फॉरवर्ड, और इन सब की स्पीड सेम है। मतलब ये सारे के सारे एस्ट्रॉइड्स है ना, किसी पर्टिकुलर स्पीड से मूव कर रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जो कि सेम है, ठीक है। मतलब 10 मीटर पर सेकेंड और 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और जिनका नेगेटिव साइन है ना, वो नेगेटिव डायरेक्शन में या फिर अपोजिट डायरेक्शन में सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब यह है, एंड वी नीड टू फाइंड आउट द स्टेट ऑफ एस्ट्रॉइड्स आफ्टर कोलिजन। मतलब ये जो अपोजिट डायरेक्शन वाले जो एस्ट्रॉइड्स हैं वो एक दूसरे से टकराएंगे, और जो छोटा वाला होगा ना वो एक्सप्लोड कर जाएगा। तो इस वाले केस में कौन से एस्ट्रॉइड्स आपस में टकराएंगे? एक तो ये वाला 2 एंड -1 वाला, तो -1 एक्सप्लोड कर जाएगा और 2 अकेला बचेगा, राइट। एंड इट विल कीप मूविंग फॉरवर्ड इन द सेम डायरेक्शन, ओके। बट 5 एंड 6 जब कोलाइड करेंगे, ये दोनों एस्ट्रॉइड्स जब कोलाइड करेंगे, तब 5 एक्सप्लोड कर जाएगा, है ना। तो वी जस्ट नीड टू फाइंड द फाइनल स्टेट। तो व्हाट विल हैपन, वी विल चेक। अब मैं सॉल्यूशन का इंट्यूशन सोचने की कोशिश करते हैं। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट इंडेक्स एंड विल चेक इफ द नेक्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो सेम साइन का है या नहीं। अगर अपोजिट साइन होगा तो दे विल कोलाइड, है ना। तो फर्स्ट वी विल चेक इफ द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकंड एलिमेंट, मतलब जो फर्स्ट इंडेक्स है और उसके बाद वाले इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो सेम साइन है या नहीं है उसका। तो इनका सेम साइन है तो देन वी विल मूव फॉरवर्ड। अगर अपोजिट डायरेक्शन होगा तो देन वी विल नो के एक जो स्मॉलर साइज वाला है वो एक्सप्लोड कर जाएगा। तो अभी के केस में तो दोनों का साइन सेम है, तो वी विल मूव फॉरवर्ड। लेट्स से दिस इज अ पॉइंटर वी आर टेकिंग, एंड on the next point we will check for 5 and we'll check if the next element in its मतलब अगले इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसका साइन सेम है या नहीं है। लेकिन इसका साइन साइन सेम नहीं है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये दोनों कोलाइड करेंगे। कोलाइड करेंगे तो वी विल चेक कि विच वन इज ग्रेटर। जो ग्रेटर होगा वो बच जाएगा और जो स्मॉलर होगा वो एक्सप्लोड कर जाएगा। तो फर्स्ट आइटरेशन के बाद में व्हेन वी सी कि 5 एंड -6 आर कोलाइडिंग, देन 5 विल एक्सप्लोड। 5 एक्सप्लोड हो जाएगा तो इसको हम पॉप आउट कर देंगे 5 को। सो लेट्स से वी आर टेक कीपिंग track of the values in a stack. So first we will move to the first index or the zeroth index and we'll check. First we will check if the sign of the next element is same। अगर ये सेम है तो इसको हम स्टैक में डाल देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे, उसको चेक करेंगे और उसको भी स्टैक में डाल देंगे। कैसे? स्टैक में डाला एंड देन वी विल कंपेयर इफ द नेक्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर और स्मॉलर। अगर वो ग्रेटर है तो उसको हम ना स्टैक से पॉप कर देंगे। तो यहाँ से इसको पॉप कर देंगे एंड देन वी विल compare the next element with the current element. Okay, fine, bro. Then we will compare the stack dot peak with the current element. Okay, I'm getting it. We just need to return an array. Okay, so int and is equal to asteroids got length and stack integer stack is equal to stack. Okay, and for each and if for int I is equal to 0, I less than and I plus plus. So we will be checking for each asteroid and we will check why stack is not empty or empty. Mm,
wait, okay, while stack is not empty, stack dot is empty, and see what we are doing. सबसे पहले जब फर्स्ट इंडेक्स पे होंगे हम, we will check if there is a element in the stack. So initially जो stack होगा वो तो empty रहेगा. तो if the stack is empty, we will just simply insert the current element in the stack. ठीक है. अगर अपना stack खाली था तो हम simply current element पे stack में insert कर देंगे. And will move and will move the pointer forward. Okay. And we will move the pointer forward, and then we will check if the stack is empty. Stack is not empty. अगर stack empty नहीं है तो stack dot pick को हम compare करेंगे current element से. अगर उन दोनों का साइन डिफरेंट हुआ तो कोलिजन होगा तो वी विल रिमूव द स्मॉलर वन आउट. ओके. तो अगर जैसे कि 5 का साइन -5 होता तो वी दे बोथ विल कोलाइड, और ये दोनों कोलाइड करेंगे तो वी विल चेक के विच वन विल रिमेन आफ्टर द कोलिजन. तो 3 तो एक्सप्लोड हो जाता अगर साइन डिफरेंट होता, और हम इसको पॉप कर देते और 5 को इंसर्ट कर देते. तो अभी के केस में तो दोनों का साइन सेम है तो हम दोनों के इंसर्ट करेंगे. तो व्हाट वी नीड टू डू, कि फर्स्ट वी विल चेक इफ द स्टैक इज एम्प्टी, एंड स्टैक इज नॉट एम्प्टी, देन व्हाट वी विल चेक, अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है देन वी विल चेक इफ द साइन इज सेम. तो हाउ डू वी check if the sign of both the number is same? What if both are negative and both are positive? Same sign check करना है. Okay, product is greater than 0. Okay. So what we will do, stack dot peak into current element, that is asteroids of I is greater than 0, right? So अगर इन दोनों का, बट पुश तो करेंगे ना, पॉप नहीं करेंगे बट पुश करेंगे. ओके. मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ क्या. तो देखो क्या करने वाले हैं. अगर सेम हुआ साइन, अच्छा ठीक है, यू आर राइट, तो लेस देन 0 होगा. ठीक है. ओके ओके ओके, यू आर राइट. हाँ, विल ये होगा लेस देन 0. तो जब इन दोनों का साइन डिफरेंट होगा देन ओनली वी विल पॉप द एलिमेंट. एंड कब तक पॉप करेंगे, जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता. ओके. एंड ठीक है, साइन डिफरेंट वाला केस हो गया. एंड ये फाइल के बाहर करंट एलिमेंट को तो हम पुश करेंगे कि जो स्टैक डॉट पुश एस्टेरॉइड्स ऑफ आई को पुश करेंगे, राइट. एंड if the sign of both the asteroids is opposite, then we will compare which one is greater. If the stack dot peak
का एब्सोल्यूट वैल्यू। वो कैसे निकालेंगे? मैथ डॉट एबीएस। This is the right way to compare the absolute values, right? Mm, yes, 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 it's true. I am also confused. Let's complete this drawing first. What we were doing, we were inserting the current element into the stack and moving forward, that is for loop. Okay, and we will comparing कि if the stack is empty, if the stack is not empty, we will comparing the sign of both the elements, the element on the top of the stack and the current element. And if the sign is same, we will just push the element. Otherwise, if the sign is different, we will compare the values, the absolute values. ठीक है, I'm doing it. Stack cost or if math dot abs of stack dot peak is greater than the current element, that is current asteroid, that is asteroid of I. Asteroid asteroids of I. That means कि जो stack के, अच्छा ठीक है, इसका भी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, तो that will be math dot abs of asteroids of I. So it would be, नहीं नहीं, इतना अलग से कंडीशन नहीं लगाना पड़ेगा, if or else कंडीशन से हो जाएगा. तो we are just comparing the absolute values, okay, and we are checking if the stack dot peak is greater than asteroid. अगर stack dot peak, we are inside the while loop में हमने पहले कंडीशन लगा रखा है कि इन दोनों का साइन सेम होगा तभी हम इस while loop के अंदर आएंगे. एंड वी आर चेकिंग द एब्सोल्यूट वैल्यू, किसकी बड़ी है, लाइक किसकी ज्यादा है. तो अगर स्टैक डॉट पीक की एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा है, तो वी विल डू नथिंग और स्किप द करंट एलिमेंट, क्योंकि वो एक्सप्लोड हो जाएगा. इसकी जगह वी शुड डू
कि अगर स्टैक डॉट पी की वैल्यू करंट वैल्यू से बड़ी होती है तो वी विल पॉप इट। तो स्टैक डॉट पॉप, ओके, स्टैक डॉट पॉप, जो जो टॉप की वैल्यू है वो पॉप हो जाएगी। एंड इट विल कंटिन्यू वाइल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक फ्लॉ है। देयर इज फ्लॉ। ठीक है, व्हाट वी वर डूइंग कि यहाँ पे सबसे पहले 3 पे जाएंगे, स्टैक इज एम्प्टी, 3 को इंसर्ट कर देंगे, पुश कर देंगे। देन 5 पे जाएंगे, 5 पे साइन को चेक करेंगे, दोनों का साइन सेम है तो 5 को यहाँ पे पुश कर देंगे इसके ऊपर। It will get inserted on the top of the stack. Then the sign is negative, it will compare. If the sign is different, so sign is different, it will compare the values, absolute values. So 5 की absolute values smaller है than the current asteroid, तो we will pop it up। तो इसको पॉप कर देंगे तो ये यहाँ से हट जाएगा। then we will compare the next top value of the stack and we will compare with the current one। so इसका साइज भी कम है, इसका साइन भी नेगेटिव है, ये भी पॉप हो जाएगा। इसके बाद में वी विल इंसर्ट -6 इनटू द स्टैक। ओके, हाँ सही तो है, यहाँ पे फिर -6 इंसर्ट हो जाएगा। एंड देन ओनली वी विल मूव फॉरवर्ड एंड वी विल चेक इफ द साइन इज डिफरेंट। हाँ सही है, वी आर डूइंग इट राइट। वी आर जस्ट पॉपिंग इट एंड वी विल पॉप इट until the stack is empty and the signs are different। if the sign is same we will move forward। stack dot pop सही है। and then do we have to do anything? Now suppose the pointer is pointing at the third index, that is 2, and now we will compare the signs, signs are different, and now the condition comes जब stack dot peak जो है ना वो greater than the current asteroid हो जाएगा। अभी तक तो ये था कि less than the current asteroid था। तो what we will do, we will break out of the while loop, I think। अगर stack dot peak की absolute value greater हुई current asteroid से, so we will break out of the while loop। okay, that is what we will do। मतलब कि जो करंट वाला है उसको स्किप कर देंगे क्योंकि वो तो एक्सप्लोड हो ही जाएगा 2 से। -6 और 2 जब कोलाइड करेंगे तो 2 तो एक्सप्लोड हो ही जाएगा। उसके बाद में -1 होगा तो -1 जब आएगा इट विल गेट इंसर्टेड इनटू द स्टैक। कैसे? -1 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, 3 एंड 5 तो एक्सप्लोड हो चुके -6 से टकरा कर। देन 2 से -6 से 2 टकराया तो 2 भी एक्सप्लोड हो गया। देन -1 इज रिमेनिंग एंड देन 4 विल कम। 4 जब -1 से टकराएगा तो -1 तो एक्सप्लोड हो ही जाएगा। At the end we just need to return the elements remaining in the stack। okay, why 2 will explode na bro। 2 will collide with -6। -6 is direct going in the negative direction। okay, it's will, हाँ, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। मैं गलत सोच रहा था। तो 2 तो -6 कोलाइड ही नहीं करेगा क्योंकि इसकी रिलेटिव पोजीशन फॉरवर्ड है। अच्छा ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या गिवन है? लाइक सॉल्यूशन नहीं, इसका एग्जांपल क्या गिवन है? -6 वाला ना, तो -6, 2 एंड 4 विल बी रिमेनिंग। ओके, यू आर राइट, यू आर राइट। -6 will go in this direction and 2 will go in this direction। इसके लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा। यहाँ पे आके हमारा सॉल्यूशन ब्रेक हो जाएगा।
पॉजिटिव है तो स्टैक में पुश करेंगे, नेगेटिव है तो पॉप करेंगे। So what we can do, we are starting from the first index and we will compare. We will keep moving forward, and negative one will only collide with the previous one if it survives the previous collisions. So when we are moving, मतलब जो भी positives होंगे उनको हम स्टैक में पुश करते जाएंगे, और जो नेगेटिव्स होंगे ना उनको कंपेयर करेंगे जो भी एस्ट्रॉइड्स स्टैक में है ऑलरेडी। तो जो भी सारे पॉजिटिव्स होंगे उनको हम स्टैक में इंसर्ट करते जाएंगे, एंड whenever we encounter a negative stack which is moving leftwards, okay, इसको चेंज करते हैं। Now we are checking for each asteroid, and we are checking if the asteroid is, अच्छा ठीक है, इसको for each loop करते हैं। For int asteroid in asteroids, okay, asteroids की spelling सही है ना? Okay, and we will check if asteroid is greater than 0. Okay, asteroid. That means it is moving in the right direction. Okay, and अगर ऐसा होगा तो we will insert it into the stack. So what we will do is stack dot push asteroid. तो asteroid को हम stack में push कर देंगे, and if it is not the case, that means asteroid is less than 0, that means negative, moving in the left direction, we will check for collision. अब यहाँ पे हम while loop लगाएंगे, while stack is not empty, so is empty, and stack dot peak is greater than 0. Okay, and how do we compare the absolute values? ठीक है, ये पॉजिटिव होगा, ये तो सही है, एंड द एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, स्टैक डॉट पीक इज लेस देन नेगेटिव ऑफ एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड तो करेंटली नेगेटिव है, तो वी आर चेकिंग नेगेटिव ऑफ एस्टेरॉइड।
तो इट विल बिकम पॉजिटिव, और अगर इसकी पॉजिटिव वैल्यू से कम होगा तो इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू इज स्मॉलर देन द करंट एस्ट्रॉइड. ओके. एंड वी विल पॉप द लास्ट स्टैक, स्टैक डॉट पॉप द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक, क्योंकि जो स्टैक डॉट पीक की वैल्यू है वो करंट एस्ट्रॉइड से छोटी होगी. ओके. एंड वन मोर थिंग, कि अगर दोनों का साइज सेम हुआ तो दोनों एक्सप्लोड करेंगे, या एक ही एक्सप्लोड कर, लाइक मतलब दोनों एक्सप्लोड नहीं करेंगे. Meaning each asteroid move at the same speed. Find out the state of asteroid. If two asteroids meet, the smaller one will explode. If both are same size, both will explode. ओके. एक कंडीशन और ऐड करनी पड़ेगी कि अगर दोनों का साइज सेम है तो बोथ विल एक्सप्लोड. दैट मीन्स वी विल, अच्छा ठीक है, एल्स में भी वी विल चेक फॉर इक्वल साइज. ओके, तो इफ स्टैक इज नॉट एम्प्टी, मतलब ये होने के बाद भी स्टैक इज नॉट एम्प्टी, नॉट इज एम्प्टी, एंड stack dot peak is equals to minus of asteroid, then what we will do, we will pop both the elements. मतलब दोनों को जो सिर्फ पॉजिटिव है ना अपने स्टैक में, तो उसको पॉप कर दूंगा, स्टैक डॉट पॉप. ओके. एंड इसके बाद में एक और कंडीशन क्या रिमेनिंग है. एज केस क्या होगा कि स्टैक एम्प्टी हो जाएगा, या तो मतलब सारे के सारे जो स्मॉलर एलिमेंट्स है वो पॉप हो चुके हैं. तो अगर स्टैक एम्प्टी हो जाएगा तो उसमें तो नेगेटिव वाला एस्ट्रॉइड इंसर्ट हो जाएगा. तो एक तो we will check else if, else if stack dot is empty. ठीक है, is empty, और या फिर stack dot peak is negative. Stack dot peak is negative, that is zero, less than zero. Okay. So अगर ऐसा होगा तो we will insert the current वाला negative into the stack. मतलब we will stack dot push asteroid into the stack. ठीक है. Now how to convert the stack into an array. अभी इसके अंदर जो भी है सारे एच केसेस कवर हो गए आई गेस. Array.
Return collections stack dot in array. Will it work? Let's run it. Error. Okay, object cannot be connected. But we don't know the size, no? मतलब हर क्वेश्चन इनपुट के हिसाब से स्टैक का साइज चेंज हो जाएगा. And while creating an array, we need to give it a fixed size. So let us ask ChatGPT. Okay, ठीक है ठीक है ठीक है. Good. I feel this. Let's create. After that, let's create a new thing. New thing of size that dot size. Okay, and why that to will the टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ाएगा तो क्यों नहीं बढ़ाएगा बढ़ाएगा तो, हम्म,
अभी सही है, फॉर लूप लगा दिया। ठीक है, कुछ टेस्ट केसेस तो चल गया, कुछ नहीं चले। आगे पीछे हो गया आंसर। Okay, that is the only problem. इसको ऐसे now it should work. Size minus one. फिर ये जीरो क्यों आ रहा है? Wait, I think it is two seconds. No, it is not. Let's submit it. अरे वाह, it worked. Okay, so what we did, we just kept a track of the asteroids which were moving forward and inserted them into the stack. Otherwise, if it is negative, then we will check if it will collide with the asteroids which were already inside the stack. Okay, this is fun and it is a good solution. Decent solution for this problem. We are speaking all the things. Yeah. What is it? Asteroid collisions. Java. Copilot क्या देगा है? Is it visible right? It is visible. Copilot ने कैसा solution दिया? It created a stack asteroid boolean. The asteroid is equals to false. If not destroyed, stuck up it asteroid. Asteroid is less than zero and stuck up it is greater than zero. Same logic but different method.
ओके, ये ये इसको अपने सेव करते हैं. Let's move to the next problem. Zoro, you're doing good, bro. Thanks for helping me out. And the next problem is sum of subarray ranges. Subarray का sum निकालना है from sum range. You are given an integer array nums. The range of a subarray of nums is the difference between the largest and the smallest element in the subarray. तो सारे subarrays का maximum and the smaller लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करके उनका सम करना पड़ेगा. एंड हाउ डू वी डू दैट? यूजिंग स्टैक. Yesterday we had solved the sum of minimums, Subarray minimums. So now we need to find the maximum also and their difference. Let's see the example. For example, if the input is 1, 2, and 3, then the sum of all the ranges, range क्या होगा? For every subarray, the difference between the smallest and the largest element. Suppose 1 and 2 is the subarray, then the difference will be 1 and it will be added to the answer. And the next subarray will be 2 and 3 and their difference is also 1 that will be added to the subarray. Okay, subarrays are all the possible combination of the numbers. Okay, so there are 6 subarrays. So the first मतलब सिंगल एलिमेंट्स का तो डिफरेंस ही 0 होगा, बट when it has 2 elements, it will be 1. When it has 3 elements, it will be 2. The difference between the smallest and the largest value of subarray. So how do we do it using stack efficiently? अगर brute force approach देखेंगे तो we will compute all the subarrays and find the smallest and the largest element in every subarray and its difference and then add it to the answer. So long answer is equals to 0. You need to return the answer as long and range की क्या definition है? Range is uh, range is equals to maximum of subarray minus minimum of subarray.
अगर सारे सब अरेज को जनरेट करके उसका मैक्सिमम फाइंड आउट करेंगे तो इट विल गो टू m cube and complexity will increase. And if you use monotonic stack, so it is like the sum of subarray minimums. जैसे हम हर एलिमेंट के लिए सारे नंबर ऑफ सब अरेज काउंट कर रहे थे जिसमें दैट पर्टिकुलर एलिमेंट विल बी द मैक्सिमम और द मिनिमम. ओके. लास्ट प्रॉब्लम कहाँ था? ये सम ऑफ सबअरे मिनिमम्स. इसमें जैसे हमने we calculated the left smallest element in the we're saying fastest approach will be brute force. I don't think that is the case. So we need to calculate the sum of all the subarray minimums and the sum of all the subarray maximums. And what we can do, we will create a helper method. So one will calculate the subarray maximum, private static norm from of subarray maximum in nouns. We insert it in is equals to nouns dot length. And we will do the stack of integer stack is equals to new stack and long sum is equals to 0. Okay, good job. So int I is equals to 0, almost 10 goes to I plus plus. And stack is not empty. Stack dot p is
Let's say left min is equals to min of cells and right minimum is equals to min of size n. It is same as finding the subarray मतलब sum of subarray minimum and maximum जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था yesterday. So we will find two arrays named left min and right min. मतलब मिनिमम के लिए भी दो एरे रहेंगी, मैक्सिमम के लिए भी दो एरे रहेंगी, लेफ्ट min राइट min, लेफ्ट मैक्स राइट मैक्स. तो लेफ्ट मैक्स इज इक्वल्स टू न्यू इंट एन कॉमा राइट मैक्स is equals to new int of size n. Okay. So for every element, we will calculate or find the left minimum element and the right minimum element, and using the formula, we will calculate the number of subarrays in which the current element is the minimum or the maximum. Okay. We will use stack of integer stack is equals to new stack. Hmm. We will find the previous smaller element. Hmm. What it previous smaller element that is left min. Okay. So how we will find? We will use for loop. तो जो लेफ्ट min वाली एरे है उसमें सारी वैल्यूज हम इंसर्ट करते जाएंगे. तो for int I is equals to 0, I less than n and I plus plus. So while stack is not empty, stack dot is empty, and nums of at stack dot peak is greater than nums of I. Then what we will do, we will use stack dot top. That means hustle codes. Yes, bro. Ask me anything. And with the same for so we will insert left minimum of I that's that effect. Using ordinary operator, we will do that for this empty. अगर stack empty हुआ, then we will insert I plus 1. Otherwise, we will insert I minus stack dot peak. And then insert stack dot this. Bro, I am also in 7th semester. I was also in the same situation few months ago. So I started solving DSA problems or
मेरे कॉलेज से भी सारे मास रिक्रूटर्स जा चुके हैं, अभी कुछ कुछ बाकी हैं। स्टिल होपिंग फॉर द बेस्ट एंड मतलब डोंट बी डिप्रेस्ड ब्रो। मतलब अगर मास रिक्रूटर्स चले गए हैं तो वर्क हार्डर, स्किल upskill yourself, and you will probably get into a MNC, which is a product based company. Suyas Singh bro नहीं आया कैब का रिजल्ट, आई एम also waiting for it. And hustle coach bro, don't get demotivated, keep working on your skills. You will definitely get some better opportunity than those mass recruiting companies. मैं भी जब तक मेरा लाइक कोई एक इंटरव्यू अच्छा नहीं गया था तब तक आई वाज थिंकिंग के आई विल वर्क हार्डर। अगर अभी तक जो अपॉर्चुनिटीज मिली हैं उनमें नहीं हुआ है तो आई विल वर्क harder on myself to get some better opportunities than those which are already missed. ठीक है? So, and it is not that difficult to like stand out. मतलब बिल्कुल bro, it is very very much possible. Make sure your resume is up to date, but you have to put some efforts, right? मतलब तुम like ऐसे बैठे बैठे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ऑफ कैंपस ऐसे ही हो जाएगा। ऑफ कैंपस के लिए तुम्हें थोड़ा और ज्यादा। आपका क्या सीन है ब्रो? आई एम ऑल्सो अनप्लेस्ड राइट नाउ, आई एम ऑल्सो स्टिल कंफ्यूज्ड कि क्या होने वाला है मेरे साथ। कुछ इंटरव्यूज अच्छे गए हैं जिनका रिजल्ट आना बाकी है, जैसे श्रेयस पूछ रहा है कि एफजी का रिजल्ट आया क्या, तो उसका रिजल्ट पेंडिंग है अभी, दैट इज नॉट कंफर्म। और मतलब इंटरव्यू अच्छा गया था तो आई कुड थिंक कि यार अब तो मेरा हो जाएगा, बट आई हैव मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं थोड़ा ऐसा ईज ऑफ होता हूँ कि यार अब तो हो जाएगा, तो मेरे साथ तभी बुरा होता है। तो आई एम नॉट थिंकिंग कि अब तो हो ही गया, आई एम जस्ट वर्किंग हार्डर। और जब तक ज्वाइनिंग के बीच में जितना टाइम रहेगा आई विल बी अपस्किलिंग माई सेल्फ एंड कीप ट्राइंग इन बेटर कंपनीज। लाइक अगर मैं थोड़ा अच्छा कर पाता हूँ, डीएसए मेरा अच्छा हो जाता है, तो आई विल स्टार्ट अप्लाइंग ऑफ कैंपस ऑल्सो अंटिल कैप जेमिनाई। मतलब अगर कोई भी कंपनी, मास रिक्रूटर कंपनी मुझे ज्वाइनिंग के लिए नहीं बुलाती है तब तक आई विल कीप पुशिंग। होता है ब्रो, होता है, बहुत ज्यादा होता है ऐसा, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है। लक फैक्टर भी होता है कई बार। हसल कोड इज सेइंग मेरे रूममेट का हो गया कैप में, कुछ नहीं पड़ा था वो। हो जाता है ब्रो, समटाइम इट आल्सो हैपेंस, बट इन माय केस रिजल्ट ही नहीं आया अभी, तो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कैप चलने का। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। नो ब्रो, आई विल नॉट। मैंने मतलब जब टू बी ऑनेस्ट, मैं जब फर्स्ट ईयर में था ना तब से मेरे दिमाग में ये थॉट था कि आई डोंट वांट टू डू जॉब फॉर एवर। तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना है एंड आई विल कीप स्ट्रीमिंग। मतलब मैं रेगुलरली डीएसए करूंगा, मतलब जैसे प्लेस भी हो जाऊंगा ना तो उसके बाद भी आई विल बी सॉल्विंग डीएसए प्रॉब्लम्स, क्योंकि आई डोंट वांट टू गेट स्टक इन अ एवरेज जॉब। जैसे कि कोई भी मास रिक्रूटर कंपनी ने स्टक नहीं करना है किसी भी रैंडम जॉब पे। आई विल बी वर्किंग हार्डर टू get promoted to a better company or better job or like do better in life financially. So streams तो बंद नहीं करूंगा मैं, I will keep streaming regularly even after the challenge ends or completed. वो सबके केस में यही है एंड टू बी ऑनेस्ट नो वन इज 100% स्किलफुल, कि जितना जिस स्किल के लिए जो हायर होते हैं, जो प्रोफेशनली जो जॉब प्रोफाइल गिवन होती है ना उसके अकॉर्डिंग most of the people are unskilled. They still get hired and they get trained in the companies. एस जी भाई सिंह मेहनत की है, रिजल्ट अच्छा ही होगा। यस ब्रो, होपिंग फॉर द बेस्ट। सीरियंस का नाम सुना है? यस ब्रो, सुना है, आई हैव बीन देयर।
Skills can be learned, bro. हाँ, it is good, bro. It is really good. Hmm. Syrians, they are doing a great job. मतलब बहुत ही अच्छा कर रहे हैं वो बाकी इंस्टीट्यूट से तो. We are doing 3JS also. That's great. And where are you from, Hustle Codes? You're from Bhopal or from somewhere else? अरे हो जाएगा जोरो. कल कल जो एक प्रॉब्लम किया था ना, सेम फंडा लगेगा. कल एक प्रॉब्लम किया था ना, सम ऑफ सबरे मिनिमम्स. तो हमें क्या करना है कि पहले एक तो सम ऑफ सबरे मिनिमम्स निकाल लेंगे और एक सम ऑफ सबरे मैक्सिमम्स निकाल लेंगे और उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा. ओके. वी विल डू इट. मतलब वी विल फिगर आउट हाउ टू डू इट, बट आज तो करेंगे इसको. अच्छा ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हैं. व्हाट वी डिड राइट नाउ, वी हैव कैलकुलेटेड द लेफ्ट प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट दैट इज लेफ्ट min. मतलब लेफ्ट min के अंदर जो स्टोर करना है वो सारे नंबर्स हमने फाइंड आउट कर लिया. इसको लिख देते हैं यहाँ पे. लेफ्ट मिनिमम हमने फाइंड आउट किया इसमें एंड देन स्टैक को क्लियर कर दिया. आफ्टर दैट वी विल फाइंड द राइट मिनिमम. कल कल का स्ट्रीम देखा था क्या जोरो? कल स्ट्रीम करते टाइम हमने ये वाले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखा था, सीखा था, समझा था. तो उसमें व्हाट वी डू कि हर एलिमेंट का ना प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट और द नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं और उसकी हेल्प से वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ सब एरेज इन विच द करंट एलिमेंट इज इन मिनिमम और द मैक्सिमम. राइट. हसल कोड से सेम. इनिशियली मैंने सीपीपी से स्टार्ट किया था, डीएसए. लाइक कभी इतने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं. लौट कर फिर से एरे पे ही आ जाता हूँ. नाउ आई एम थिंकिंग कि जेएस में शिफ्ट कर लूँ तो डीएस एंड डेव दोनों में चलेगा. ओके. मैंने भी स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में सी प्लस प्लस से किया था. एरे तक सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए थे एंड देन आई शिफ्टेड टू जावा. फिर जावा में कुछ मतलब एक साल मेरा ऐसा कांस्टेंट चला कि एरेस तक आता, फिर भूल जाता, फिर रिवाइज करता, फिर एरेस तक आता. तो सबके साथ होती है प्रॉब्लम एंड द ओनली प्रॉब्लम इज कंसिस्टेंसी. वी आर नॉट कंसिस्टेंट. एंड इट्स अप टू यू ब्रो. यू आर लर्निंग. मतलब तुमने कोहोर्ट ज्वाइन किया है तो आस्क योर मेंटर्स देयर. मतलब दे विल गाइड यू बेटर. आई हैव नो गुड आइडिया ऑफ डीएसए यूजिंग जावास्क्रिप्ट के मतलब जावास्क्रिप्ट की मदद से डीएसए कितने अच्छे से कर सकते हैं. आई हैव नो आइडिया. सो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू गिव यू फीडबैक ऑन दैट. बट इन माय एक्सपीरियंस मैंने सी प्लस प्लस में डीएसए किया है, जावा में डीएसए किया है. दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. यू कैन डू पिक एनी. बट जावा स्क्रिप्ट में मैंने डीएसए नहीं किया है तो आई कांट टेल यू एनीथिंग अबाउट दैट. एंड लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन. नाउ वी विल find the right minimum element. So 4.I is equals to n minus 1 and while I is greater than equals to 0, I minus minus and y stack dot is empty, not empty, sorry, not stack dot is empty and
जोरो इज सेइंग जेएस में सॉल्यूशन भी नहीं मिलते यूट्यूब पर डीएसए के। डिसाइड कर लो, प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी लैंग्वेज में जेएस। जेएस क्या हो जाएगी? तो डेव में काफी बेनिफिट रहेगा। अच्छा, स्ट्रांग हो जाएगी, ओके। हाँ, डेवलपमेंट में बेनिफिट रहेगा वो तो फॉर श्योर, बट ओके। बट तुमने कोहोर्ट लिया है, तुम इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो उस कोहोर्ट में, तो लिसन टू देम, योर मेंटर्स। इफ दे आर सेइंग इट विल बी द बेस्ट ऑप्शन, देन यू शुड गो विद इट। डोंट थिंक ट्वाइस। और तुमने कोहोर्ट लिया है तो लाइक जस्ट लिसन टू देम, दे आर एक्सपीरियंस्ड। एंड डोंट वेस्ट टाइम ओवर थिंकिंग कि यार मैं ये कर सकता था, वो कर सकता था, ऐसा होगा वैसा होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, जस्ट डू द वर्क। कुछ भी करोगे यू विल गेट टू समवेयर। ओके। None of that dot peak, right, is greater than current. Current will be nums of I. Greater than equals to, greater than equals to nums of I. Then what we will do, we will check dot pop. So अगर greater होगा तो we will pop from the stack, and minimum होगा तो we will store into the stack. Mm, and right minimum is set to them. So not inside but outside, and we will update the right minimum array of I is equals to not stack dot is empty. If it is true, then we will insert n minus I. Otherwise, we will insert stack dot peak minus I. Okay. And after that, we will push I into the stack. Stack dot push I. Okay. And after that, we will create the stack. Stack dot clear. So this will, in this way, we will find the left minimum and right minimum for the each element in the array. And similarly, we will find the right max and the left max for each value in the array. And then we will calculate the contribution. And okay, ब्रो नहीं होगा, लाइक डोंट टेक स्ट्रेस। धीमे धीमे प्रोग्रेस करने की कोशिश करो। एक मेन प्रॉब्लम पता है क्या होती है कि कई सारी चीजें एक साथ करनी होती है, तो वी थिंक के यार दूसरी चीज करने के लिए पहली चीज को छोड़ना पड़ेगा, बट इट इज नॉट द केस। वी आर जस्ट मेकिंग एक्सक्यूजेस कि आज सुबह एग्जाम है, शाम को भी ऐसे नहीं करते हैं, थक गया मैं तो आज एग्जाम। ओके। वेयर इज अ लाइव डिस्कॉर्ड का लिंक आई विल शेयर यू विद, आई विल शेयर विद यू। Could see and there's a cat. हाँ ब्रो, आके चली गई, उसने मेरा दिमाग खराब कर दिया। अभी लास्ट वीक में उसी की वजह से लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा इंटरव्यू बहुत ही अच्छा ले लिया था उन्होंने थोड़ा।
LTI Mindtree interview. Okay, I've shared the link to the server. You can join there. सेम ब्रो, बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू नहीं हुआ, मेरा भी इंटरव्यू नहीं हुआ. Anchor is saying hello, hello, Anchor bro. How are you? पहचाना मुझे ब्रो? आई फॉरगॉट. मे बी आप लाइव स्ट्रीम में आए हो पहले कभी. लिंक्डइन पे कनेक्टेड हैं शायद. वी आर कनेक्टेड ऑन लिंक्डइन, राइट? अंकित. मे बी योर नेम इज अंकित. Vaibhav's friend. Okay. But how will I know कि तुम वैभव के फ्रेंड हो? ओके ओके. बट मैं कैसे पहचानूंगा तुम्हारे यूजर नेम से ब्रो? बट थैंक यू सो मच ब्रो joining us on the channel. अच्छा ठीक है. लेफ्ट मैक्स राइट मैक्स के लिए भी कैलकुलेट करते हैं वैल्यू एंड देन वी विल फाइंड द कॉन्फ़िगरेशन. अच्छा पिछली बार भी आया था इसलिए. ओके बट तब ये नहीं बताया ना तुमने कि वैभव के फ्रेंड हो. लेफ्ट मैक्स के लिए क्या करेंगे? previous creator element, right? So for int I is equals to 0, I less than n, I plus plus, and while not stack is not empty, stack dot is empty, and nums for stack dot peak is less than nums of I. सेम सेम कोड है. एरे ऑफ मतलब मिनिमम सम ऑफ मिनिमम के जैसा, बस इसमें लेस देन nums of I आ जाएगा. ओके. And then we will do stack dot pop. अगर मिनिमम एनकाउंटर होता है तो वी विल पॉप इट एंड अपडेट लेफ्ट मैक्स. मैं स्पेलिंग में गड़बड़ ना करूँ बस नहीं. लेफ्ट मैक्स ऑफ आई is equals to, first we will check if stack is empty. Stack dot is empty. If it is true, then we will return I plus 1 into the array. Otherwise, we will return I minus stack dot p. Okay. And then we will insert I into the stack. After that, we will create the stack. And then similarly, we will find right max. Right max. Here, for int I is equals to n minus 1, right? We will start from the end, that is n minus 1, I greater than equals to 0, and I minus minus. And while stack is not empty, so not stack dot is empty, is empty. Okay. And nums of stack dot peak is less than equals to nums of I. Okay. And if it is the case, then we will pop stack dot pop from the stack, and then update the right max value for
each num in the array. So right max will be equals to n minus 1 if the stack is empty. So stack dot is empty if it is true. Then we will return n minus 1 into the array of right max. Not 1, it is I. Otherwise, we will insert stack dot peak minus I. Okay. So we have the right max, left max, and right min, left min, and stack dot push I. Okay. Here again was. And now we have four variables for each value in the array. Now we need to find the total sum. We had created the variable name answer as long answer is equals to 0. और रेंज का फॉर्मूला क्या था? मैक्सिमम सम ऑफ मैक्सिमम्स माइनस सम ऑफ मिनिमम्स. So how we can calculate the total sum? So 4 int I is equals to 0, I less than n, I plus plus. We will say long max contribution contrib के लेवल पे तो contrib is equals to the left max of I into right max of I into array of I. So left max का मतलब पता है what it gives? The number of subarrays on the left of the current element in which the current element is the maximum. Okay. Nums of I. Not array of I, nums of I. Okay. And similarly, long min count or contribution is equals to left min of I star right min of I star nums of I. Okay. And the answer plus equals to the max contrib minus minimum contribution. And after that, we will return answer as a log, right? So let's try to run it and compile the error. Left min, right min. What is the part? Okay, n int and is equals to nums dot length. यही error है, sorry. 6 errors. Stack dot root syntax. Line number 48. Brackets नहीं लगाए. Sorry. Okay. Any other error? Okay. It worked. I hope you got it.
Sometimes it feels like we should we need to remember the solution of previous problems that we have already solved. But it is not the case. We should not remember but practice more and more. Let us submit it and see what अच्छा ठीक है गलत हो गया ये पूरा गलत ही है सबमिट ही नहीं आ रहा what is the error the size लॉजिक तो पूरा सही है तो what is the problem discussion must do this first okay this one is a hard I can never solve some other questions optimally in my life seriously हाँ but let's see the solutions we look solution with the brute force है अच्छा ठीक है brute force तो m cube टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से होगा we look solution what long result is equals to 0 I less than or equal to plus plus okay inclusion result is equals to the replicable number of subarrays in which the practical okay I got it so it is same right जैसा no it is not same n is equals to 8 dot lines j and k j prime which is start I minus j into j minus k because no confusion let's see some analysis monotonic stack next critical element previous greater element, next smaller element, previous smaller element, and then Python solution ready. Strivers approach. No, I don't need your solution.
as cheaper primary account solution. C plus plus में क्या किया NSE फाइंड किया PSE फाइंड किया and then left right start. Okay. Intuition logic to saying yeah, then what is the problem? Max E minus me. ज़्यादा है. Okay, let's ask ChatGPT. Here is the problem with the solution. And there is good question to what he thinks of this code. Chiefly the difference between the maximum and minus, how it works in the Monotonic Stack. What error we are getting, wrong answer. Okay, source of wrong answers for problem involving functions of specific Monotonic Stack. Root cause. The issue lies in how duplicates are handled when determining the next smaller or next greater element. The comparison operator are using decide whether equal elements go to the left or right, and this choice must be consistent across min-max step provide over counting and under counting subarrays. Okay, so right mean change greater than equal to greater, and left mean greater to greater than equals to. तो एक सिंपल सी मिस्टेक की वजह से ऐसा हो रहा है लेफ्ट में when we are comparing and comparing it with the current we will go till equals to left main and right main we will replace and other but your code must maintain consistent symmetry with how अच्छा ठीक है दोनों को सेम करना है okay okay it is greater than it is greater left max is less than okay. And what else we can improve on this? A quick patch example. Okay, update this part only.
This is a let's try again. इससे कोई फर्क पड़ेगा? Still getting the same error. It has nothing to do with that. Okay, this is the main problem. मुझे भी यही लग रहा था. Integer overflow. Now it will not give any error. Now it's working. Beats 51% of solution. 22 milliseconds. But it's fine. Okay, logic worked. And we succeeded. And this was it for the problems today. We will solve the remaining problems tomorrow. Okay. Who is watching right now? SG Bhai, you are there or Zoro? Mm, whatever. Photo Leo. Okay. SG bro, do you know how to play chess? Will you play chess with me? Upse, I will do. Okay, I will also revise it tomorrow and we'll do the remaining problems tomorrow. मतलब ये थोड़े difficult हैं यार. Today we solved these two problems and tomorrow we will solve the remaining three problems from this set. And now we will play chess and we'll end the stream at 12 a.m. exact. Okay. And let's go. Do you guys want to play chess with me? Any one of you? I will share the challenge link. Is the screen visible? This is okay. Your game. Here, but challenge. Now, here's the challenge. Here is
I love jazz. Join in and we will play. Zoro, where are you from? तुमने बताया नहीं. You are from Bhopal? Okay, okay, okay. You are doing MCA from Gwalior. बताया था तुमने कल. Sorry, I forgot. Really sorry. कोई ज्वाइन करने वाला है चेस में? Otherwise, we will end the stream. Okay, log in and I'm going to log in. Hustle Codes is saying सीट के सारे क्वेश्चन 36 डेज में किए हैं. यस ब्रो. जितने भी क्वेश्चंस लाइक ये जो शीट में मतलब जो स्ट्राइवर की शीट में जितना भी ये प्रोग्रेस दिख रहा है ना ये 36 डेज में ही किए हैं सारे के सारे. पूरा प्रोग्रेस यूट्यूब के चैनल पर डला हुआ है सारे लाइव स्ट्रीम्स. यू कैन वॉच आउट. ज्वाइन इन ब्रो. We send the link. Okay, where is the link? Zoro is saying we can't see you. अभी भी यही बता रहा है क्या? ओके, गॉट इट. स्टार्ट. एसजी भाई. मेक योर फर्स्ट मूव ब्रो. एसजी भाई मूव. मेक योर फर्स्ट मूव. सॉरी. ओके. सिट मेक इट now. Now we are live. लाइव तो हम 3 घंटे से हैं. Look at clean. Live.
मजा नहीं आ रहा है। SG practice, bro, practice. I've been practicing it since my first year, you can say. Almost 5 years हो गए हैं जब से मैं टाइपिंग कर रहा हूँ। आई एंजॉय डूइंग दैट। कभी भी बोर होता हूँ तो मैं टाइपिंग करता हूँ। You're paying after 4 years. Let's see. Your mate. कोई और खेलेगा या किसी को आता है चेस खेलना? Someone who want to challenge you. कोई बात नहीं। We learn by doing. खेलना चाहोगे जोरो? वैसे मैंने तुमसे पूछ अच्छा ठीक है। You have already shared it. Okay, bye bye Zoro. See you tomorrow. Today we got late or something else. Today our screen is not getting pushed like yesterday. Okay, I'm ending the stream, guys. See you tomorrow. Okay, bye bye. This was it for today. We played a chess match also. And the screen.